The food industry in India is estimated 27 billion USDs in 2023. But as the industry is growing, seems like problems are also increasing. Problems like improper, unhygienic food handling by the street vendors, and problems like waste disposal near the street vendors. Hi everybody, India is undeniably facing a lot of health challenges, From street foods and street food vendors. and those problems are seen looks like the foodborne infections, the gastric infections, the food poisoning itself, and the most important, transfer of pathogens. In this episode, we will find out why these problems are happening in the first place, and as citizens of India, what we can do to overcome this situation. इंडिया में खाना सबसे मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए. अगर इस इंडस्ट्री को ध्यान से देखा जाए तो जितने भी स्पाइस प्लेट इंडिया के पास हैं उतना डाइवर्स्ड स्पाइस प्लेट किसी और कंट्री के पास नहीं है. यू कैन से रोमेनियन फूड इज जस्ट रोमेनियन फूड, ग्रीक फूड इज जस्ट ग्रीक फूड, थाई फूड इज जस्ट थाई फूड, बट इंडियन फूड इज साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, वेस्ट इंडिया फूड, असमी फूड. इट हैज अ लॉट ऑफ स्पाइस प्लेट्स, और जिसके कारण बहुत सारे नए और बहुत सारे छोटे बिजनेसेस को मौका भी मिलता है टू कम इन फ्रंट. बट नॉट एवरीबडी हैज ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस. इसलिए बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ किसी भी फूड स्टॉल को, किसी भी स्ट्रीट फूड स्टॉल को शुरू करते हैं. While they were starting these kind of businesses, they never bother much about the sanitization facilities. They never care much about the hygiene facilities, the good and pure source of water, the oil, the ghee, whatever the things they are using. They don't care much about the quality of those things. They care much about their profits, because of course everybody has their own needs, and that's not wrong enough. But statistically speaking, these things cause a lot of health hazards. Now as we know the problem, solution करें उसका. बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है. जितनी स्टॉल्स आप दिन में देखें, जितनी भी स्टॉल्स आप पूरे दिन में देखें, उन पर खाना खाने जाएं या जिस भी तरह से आप उनसे इंटरेक्ट करें, उन स्टॉल्स के स्टॉल ओनर्स को, अगर वो एजुकेटेड हैं वेल इनफ, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेट देम एंड टेल देम व्हाट दे आर सर्विंग एंड हाउ दे कैन सर्व इट मच बेटर, जस्ट सो दैट इंडिया की ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया का ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नंबर रिड्यूस हो पाए. एंड आई होप you got to learn something out of it. See you in the next one.